communal flashpoint at Delhi's doorstep. Haryana's Mewat up in flames. Blaze singes smart city Gurugram. %100% accuracy amidst the blaze. जिस कदर हथियार लहराए गए, जिस तरफ गोलियां चलाई गई, ये अकस्मात हुआ नजर नहीं आता। ये तो किसी ना किसी ने इंजीनियरिंग की है। First hand reports tell the full story. Haryana on edge. Top focus on India first. As we enter day 4 since the clashes in Haryana on the doorstep of Delhi, with 6 people dead, hundreds injured, so many people displaced, hundreds of vehicles destroyed, police stations burnt down, we take you down to the very basic, the genesis, where it all started, how it was triggered. You've probably heard that these provocations began on social media. Here on India First, we confirm to you, not only is that true, but our investigation by India Today's Ankit Kumar nails it down. Take a look at this exclusive. 6 dead. Countless injured. Over 100 vehicles reduced to burnt shells. A police station smashed. Shops looted. And a national capital territory on edge. It's day 4 since the communal eruption at Delhi's doorstep in Haryana's Mewat region. And until now, the true trigger has been a matter of speculation. Not anymore. A provocative call concealed in an invitation to the Bajrang Dal's annual religious yatra. The provocation instantly triggering a response from the Muslim local in Nuh named Muhammad Samar. If there can be two faces to what triggered the horrors in Mewat, take a close look at these two men. It was their social media posts that raised temperatures to a terrifying degree, resulting in the eruption. But on India Today, we want to peel away the layers to tell you how things really started. The first seeds were planted in a cyber fraud case in Faridabad a few days ago. Tension escalated when a Muslim man from Nuh, a minority-dominated part of Haryana, who had been arrested in a cyber fraud case, passed away while in police custody at a hospital in Faridabad. Police claimed the suspect was ill at the time of arrest. In came Bittu Bajrangi and his supporters, who claimed local Muslim leaders in Nuh were provoking crowds to attack the police in the aftermath of the alleged custodial death. Local anger against the cyber crackdown had been building, with Nuh emerging as a new epicenter of online scams and cyber crimes. The situation was ripe for trouble. हम पीसी के माध्यम से सरकार से ये मांग करते हैं अफ्ताब और जाबिर जागमी का उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा और जो दंगा भड़काने की जो उन्होंने बात की कोशिश करी, इस सभी को लेकर हम फरीदाबाद पुलिस और राज्य पुलिस के साथ हम उनके साथ खड़े हैं. Bajrangi even circulated this viral video where a man can be seen calling locals to assault the police. Right after this, open calls were made on social media by Monu Manesar, an accused in the murder of 2 alleged cow smugglers from the locality. दिन सोमवार को मेवात ब्रज मंडल यात्रा है, सभी भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले. As well as by Bittu Bajrangi,
to participate in this year's upcoming annual Shobha Yatra passing through Mewat. Mohammad Samar was playing his own part in counter-provocations and organizing groups in Nuh in preparations for violence. Samar has deactivated his social media since the crackdown on the villains this week. और ये बोलेंगे कि बताया नहीं कि हम मुलाकात नहीं हुई, तो इसलिए हम पूरी लोकेशन देंगे। अभी हम पाली हैं और निकलेंगे धौस से ही। फूल माला तैयार रखना, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि ये बोलते हैं ना कि बताना नहीं, निकल गए जी, बताया नहीं, पूछा। 150 गाड़ियां फुल सिस्टम। On the fateful day of Yatra, Bajrangi posted multiple live streams with more provocative messaging on his way to Mewat. What happened next was no longer limited to a social media showdown or a cyber fraud investigation. You can look at the bus. There are bricks lying down. People have somewhere down the line fled while this bus was looted, and subsequently then this bus was used by the miscreants to break the wall of the cyber police station. The manner in which the cyber police station has been destroyed, it stands testimony that this was nothing less than a revenge. This social media build-up was not happening covertly. It was in full public view and would have raised an alarm on police systems. So how did this very public and communally charged build-up evade the attention of law enforcement? And could timely intervention against those challenging the authority of law have potentially saved lives? With Arvind Ocha and Shreya Chatterjee, Bureau Report, India Today. And news just coming in, this is a big breaking exclusive. One of the key instigators of what happened in Mewat in Haryana has been tracked down by India Today. Even as the Haryana Police are said to be on the hunt for a man named Bittu Bajrangi, one of the persons who had been live streaming provocative videos, instigating crowds and resulting in videos from the Muslim community in Nuh as well, making similar provocations and threats. The Haryana Police says that they're tracking him. India Today has caught up with him and we've put questions to him as well. तो बजरंगी, आप ये बताइए कि क्या हुआ था उस दिन, आप वहां मौजूद थे, कैसे सब शुरू हुआ? जी, हमारी हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारी एक शोभा यात्रा थी और वो बड़ी शांति से हर वर्ष शोभा यात्रा निकलती है, शांति सद्भाव से। और इस वर्ष हमारी परसों जो यात्रा निकली वो पहले से ही हमारा वो था कि हम वहाँ से अपने नल्लड़ मंदिर है मेवात में, वहाँ से जल अभिषेक करके और अन्य मेवात क्षेत्रों में निकलेंगे और पूजा अर्चना के बाद हम वापस अपने स्थानों पर जाएंगे, जिसमें अनेक महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे पूरे गाजे बाजे के साथ हम गए वहाँ पर। हमने वहाँ पर पूजा की। पूजा करने के बाद वहाँ पर हमने खाना खाया, महिलाओं ने, बुजुर्गों ने, सबने मिलके कीर्तन हुआ। उसके बाद हमारी जो गाड़ियाँ थी वो एक ही रास्ता था वहाँ का, एक सिंगल रास्ता था। उस रास्ते पर हमने बोला कि अब गाड़ियों को घुमा के निकलो। तो जैसे ही हमने बोला कि निकलो तो जो पीछे वाली गाड़ियाँ थी वो आगे हो गई, नॉर्मल बात है। जो पीछे थी वो पीछे हो गई। तो आगे जो काफिला जो चला तो हम कोई 500 मीटर या आधा किलोमीटर चले होंगे, तो वहाँ पर हमने देखा कि जो हमारे आगे की जो बस है और गाड़ियाँ हैं उनको आतताइयों ने आग लगा दी, आग के हवाले कर दिया। और फिर हमने देखा वहाँ पर तो वहीं पास में एक मस्जिद थी सड़क किनारे ही, वहाँ पर 200-250 की संख्या में उन्होंने हथियारों से
गोलीबारी चालू कर दी। आप कह रहे हैं हथियारों से गोलीबारी चालू कर दी, आप खुद कैसे निकले वहां से, आप ये बताइए। मैंने बताया ना, जैसे हम वहाँ से फिर जैसे उन्होंने गोलीबारी चालू करी, वहाँ पे आगजनी कर दी, वहाँ पे गाड़ियों में आग लगा दी। तो हमारे पीछे महिलाओं की बसें थीं और भी लोग थे, सभी लोग थे, सब एक साथ। हमने वहीं से ही यू टर्न ले लिया वापस मंदिर की तरफ, कि वापस मंदिर पे चलो, क्योंकि मंदिर एक ऐसा स्थान था कि वहाँ पर एक लग रहा था कि हम वहाँ पे बच जाएंगे, क्योंकि पीछे से पहाड़ था पूरा। आगे हम खड़े होते तो चारों तरफ से मुझे घेर लिया था, लेकिन वहाँ मंदिर पे पीछे पहाड़ था, इसलिए हमने सोचा हम बच जाएंगे। तो फिर क्योंकि बचने का मतलब हमें इतना डर नहीं था, अपनी प्राण देने के लिए, धर्म के लिए हमें डर नहीं है, लेकिन हमें अपनी महिलाओं बच्चों की चिंता थी, क्योंकि इनके साथ कोई ऐसी अनहोनी जैसे मणिपुर में घटना हुई कि बड़ा वाला मणिपुर ना बन जाए, हमें अपनी माताओं की चिंता थी। उसके लिए हमने उस यात्रा को वापस करके हम मंदिर में गए। अच्छा, आप कह रहे हैं हथियार वहां पर थे, तो तस्वीरों में तो ये भी देखा जा सकता है कि जो हिंदूवादी संगठन थे, जो शोभा यात्रा में जो लोग शामिल थे, उनके पास भी वेपन्स थे, तलवारें थी, कुछ एक लोग गन्स के साथ में भी वहां पर मौजूद थे। जो एक आध गन्स होंगी भी तो वो लाइसेंस की हैं, अवैध नहीं है। और तलवार हमारी क्या होती है, पूजा करने वाली होती है। ये तलवार हमारी शादी ब्याह वाली होती है, काटने मारने वाली नहीं होती। और एक दो तलवार थी किसी कार्यकर्ता पे, किसी बहन बेटी पे, अगर सैकड़ों की संख्या में होती तो लगता कि हम लड़ाई झगड़ा करने गए हैं। कोई अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ क्या लड़ाई झगड़ा करने जाएगा, ये सोचने की बात है। अच्छा, आपकी एक वीडियो वायरल हुई सेम डे, और अब तो काफी वायरल हो चुकी है, जिसमें आप कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, आप फूल माला तैयार करके रखिए, इस तरह की शब्दावली आप यूज कर रहे हैं, जीजा आप कह रहे हैं। आपको लगता है कि इन चीजों से माहौल खराब हुआ? ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये क्या बोला, पढ़ो। मैंने सबको नहीं बोला, कुछ जिन्होंने मुझे धमकी दी थी 2 दिन पहले मेरे फेसबुक, मेरे व्हाट्सएप पर कि आजा, तेरी तैयारी हम करेंगे, तेरे को टुकड़े टुकड़े करेंगे, तेरे को हम जला के मारेंगे। और अभी मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ, ये अब पढ़ो, आप क्या लिखा है इसमें, बताओ। आपके नाम को लगातार धमकी आ रही थी? हाँ जी, कि आओ तो सही एक बार, हम स्वागत के लिए बैठे हैं, तेरे टुकड़े करेंगे, तुझे जलाएंगे। और अभी रिकॉर्डिंग में भी अभी आज भी फोन आया है कि हम मेवात वालों को बड़ा मलाल है, हम अफसोस कर रहे हैं कि तू बच के कैसे निकल गया। अच्छा, आप एक बात बताइए, देखिए आप तो एक संगठन चलाते हैं, आपके साथ में कार्यकर्ता रहते हैं, लेकिन जो घटना घट गई उसमें 6 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 2 होमगार्ड्स हैं, 4 सिविलियंस हैं। कौन जिम्मेदार है? ये आतताई जिम्मेदार है, जिन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया। और वो आतताइयों पे योगी सरकार की तरह उनके घरों पे बुलडोजर चलने चाहिए, और मैं तो कहूँ उनका अनकाउंटर भी होना चाहिए। जो इस तरह से ऐसी घटना करी है, हमारे अफसरों को भी मारा और हमारे राम भक्तों को मारा जो वहाँ पे भोले बाबा के दर्शन करने गए थे। उनका क्या कसूर था? सिर्फ जलाभिषेक करने के बाद और उनकी हत्या करना, ये हमारा कसूर था? या हम अपने राम का नाम ला लें इस देश में, जलाभिषेक ना करें? अगर हम कोई हाव लड़ करते तो हम जिम्मेवार होते कि हमने कोई वहाँ जाके गलत हवाबाजी करी है या कोई तलवार लहराई है या कुछ करा है। हम शांति से गए हैं। और मैं दोबारा कहना चाहूँगा, हम महिलाओं के साथ गए, बच्चों के साथ गए, क्या हम वहाँ झगड़ा करने जाएंगे? If the trigger point for what happened in Haryana can be boiled down to 2 faces, then it would be the faces of 2 men, namely Bittu Bajrangi and Mohammad Samar. Both people on 2 sides of a communal divide that has resulted in the deaths of 6 people so far in the communal clashes that started on the 31st of July. But the seeds of unrest were sowed days before, at least 8 days before the eruption. And India Today's investigation has revealed that the fires of hate were fanned very much on social media. If there can be 2 faces to what triggered the horrors in Mewat, take a close look at these 2 men that we have on your screens right now. Bittu Bajrangi and Mohammad Samar. It was their social media posts that raised temperatures to a terrifying degree, resulting in this eruption. Each side says it was the other side that provoked. First, there are some that say the other side didn't provoke at all,
But Bittu Bajrangi gave a call for mobilization, putting out videos saying, "Main Mewat aa raha hoon," and warning goli pe goli chalegi. A provocative call was concealed in an invitation to the Bajrang Dal's annual Shobha Yatra through Mewat. The provocation triggered a response from a Muslim local, Mohammad Samar in Nuh, who instigated his followers to break limbs and then pretend that the attack was in self-defense. He too called for his followers to bring their friends to Nuh. The first seeds were planted in a cyber fraud case in Faridabad, however, a few days before the tension. It was this man, the death of Shaikul Khan, 30 years old, on the 23rd of July in Faridabad police custody, that actually set off a chain reaction of social media posts that resulted and erupted on the 31st of July, 8 days later. Remember, Nuh has emerged as a massive epicenter for cybercrime and online scams, and the death of a man in custody, a Muslim man in custody, is now believed to be the one key trigger point that resulted in a chain of social media posts, each one more provocative than the other, both from either side, fanning temperatures, fanning flames, raising the fever pitch of anger and poison to such a level that things reached ahead on the 31st of July. During that Shobha Yatra, stones were pelted and 6 people have died between Nuh and Gurugram. But this is to tell you, viewer, that it all started on social media. Joining me live now to go through some of the findings of this and get their views on it, Vishnu Gupta is National President of the Hindu Sena. Saira Shah Halim is a well-known activist. Welcome to you both. Thank you for being with us. Saira, I'd like to come to you first. You've seen a part of our investigation, and we'll be playing out more of it in the in the hours ahead. We'll also have more information about the social media posts, but it looks very much like this was far from being a spontaneous attack. It was far from being one-sided. It was something that was aggravated through social media, through provocative social media posts, for over 8 days before it erupted on the 31st of July. Saira. Right. Yes, Shiv. So one thing I'd like to make it very clear, even if it started off on social media, isn't it the job of the authorities to quell tempers? Isn't it the job of the authorities to take actions against any particular person, or be it a group, be it a political group or a fringe group, to stop it, to ban and to ensure that these things don't happen? But then, the role of the authorities is in question here, because why did this issue escalate? That it has become a full-fledged riot. More than 6 people have died, including 2 police personnel. A mosque has been torched. There's been a complete backlash. You look at various areas. Section 144 has been imposed. Delhi is tense. Gurugram is tense. Whole of that Delhi, Gurgaon, Haryana belt is tense. So for a social media post, so here we need to understand that it might have started, the trigger point might have been 2 individuals. But what has the government done? What has the police establishment done? What are the enforcement agencies doing? Why did they let an incident on social media? Why did they allow it to flare up? That became a communal outburst, that became a religious riot. So I think here the authorities need to be pulled up. They need to be asked some very tough questions, because and let me tell you that India Today is the only channel asking those tough questions to the Haryana government. We've just grilled the Home Minister as well. I'll come to the part of accountability of the Haryana government and the police, which is very important, in just a moment. I want to focus for the moment right now on what we found in these social media posts. Vishnu Gupta, आपका क्या कहना है इस पर? जो सोशल मीडिया में जो चल रहा था एक हफ्ते के लिए, जुलाई 23rd को लेकर जुलाई 31st तक, विष्णु गुप्ता, काफी सोशल मीडिया पे भड़काऊ चीज चल रही थी दोनों साइड से. दोनों साइड बोल रहे हैं कि एक ही साइड से चल रहा था, लेकिन अगर हम ये फेसबुक के स्ट्रीम्स देखेंगे, इंस्टाग्राम के स्ट्रीम्स देखेंगे, विष्णु जी, ये तो साबित होता है कि दोनों साइड से काफी प्रोवोकेटिव चीज बोले जा रहे थे. जी, ऐसा है, दोनों साइड से ऐसा जब काम चल रहा था और वहां की लोकल पुलिस
और जितने भी विभाग होते हैं पुलिस के, वो सभी लोगों ने उस पर नजर रखी। पुलिस को उस समय भी उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्योंकि भड़काऊ भाषण या भड़काऊ बयानबाजी कहीं से भी होती है तो वो आगे भविष्य में चल के नुकसानदायक होती है। वही भड़काऊ भाषण, भड़काऊ बयानबाजी आगे दंगे में तब्दील होगी। और मैं मेवात की हिस्ट्री में बताना चाहता हूँ, जो लोग दूर दराज के हैं, जो मेवात को नहीं जानते हैं, मैं बताना चाहता हूँ, मेवात आतंकवाद का गढ़ बन चुका है और दिल्ली और एनसीआर में अपराध का गढ़ है। जितने भी बड़े अपराध और अपराधी और जितने भी बड़े कांड टाइप जो होते हैं, वो सब के तार मेवात के यहाँ से जुड़े होते हैं और वहां कोई भी पुलिस आसानी से वहां कार्रवाई भी नहीं कर सकती। इसलिए दिल्ली के भी कुछ छोटे मोटे केस और छोटा मोटा जितना भी फ्रॉड होता है वो मेवात से ही होता है। वहां पुलिस जाते हुए भी डरती है। इसीलिए ये जो दंगा हुआ है इसमें लोकल पुलिस का बिल्कुल फेलियर है। और मैंने इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजा है आज और कहा है एसपी और डीएम और वहां के डीसी को बर्खास्त किया जाए तत्काल। ये मैंने मांग की है और मैं मानता हूं यहाँ पे लोकल प्रशासन की बहुत बड़ी फेलियर है, बहुत बड़ी फेलियर है। और भड़काऊ बयानबाजी यदि कहीं से भी हो रही थी, जो आप दिखा रहे हो, अभी भी मैं मीडिया में देख रहा हूं, लेकिन पुलिस ने समय रहते हुए कार्रवाई क्यों नहीं की? क्यों नहीं उन लोगों को अरेस्ट किया गया? और जहां तक मोनू मानेसर का सवाल है, मोनू का एक वीडियो सामने आया है, मोनू ने कहीं भी उसमें भड़काऊ बयानबाजी बोली है तो मुझे एक भी छोटी सी क्लिप आप मुझे दिखा दो जिसमें मोनू ये बोल रहा है कि हम मुसलमानों को धमकी दे रहा है या कहीं और दंगा करने की बात कर रहा है। भाई, दंगा करने की बात और धमकी देने की बात सिर्फ वहां दूसरे पक्ष की ओर से आ रही है, जिन्होंने मेवात को गढ़ बना दिया है जिहाद का। उनके खिलाफ कानून सख्त कार्रवाई करने में नाकाम रहा है। लेकिन अगर आप बिट्टू बजरंगी के वीडियोस देखेंगे विष्णु जी, उसमें भी काफी भड़काऊ बयान तो है ही। बिट्टू बजरंगी जो है बजरंग दल के, सुनिए, भड़काऊ बयान है तो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, भड़काऊ बयान है तो उस समय रहते हुए कार्रवाई क्यों नहीं की गई? हाँ बिल्कुल, इस पे मैं सहमत हूँ, इस पे मैं सहमत हूँ। सायरा, मुसलमान हो, Saira, Vishnu Gupta says exactly what you said, which is that if all these videos were happening, there should have been some kind of crackdown on these people, whether it was Mohammad Samar, whether it was Bittu Bajrangi or whoever it is. So the question arises, as far as the Haryana police or government is concerned, whether this was negligence or complicity. It's a reasonable doubt to have now. Absolutely. Now, another thing, forget about who put what on social media. Take the irresponsibility of our political leaders. Look at the Haryana Home Minister, Anil Vij. He is giving such blatant, misleading statements that 3,000, 4,000 people were held hostage by Muslim rioters in a temple, at the Nalha Mahadev temple, when the priests clearly refuted that claim. And here, people outside, a police station are making inflammatory comments and telling them to boycott a particular community. So now when these self-proclaimed religious leaders or people of a political party, be it, positions of authority like the Home Minister, CM, or whoever it might be, if you're giving misleading statements which gets refuted, this will further add fuel to the fire. And the Haryana violence continues to be our big story here on India Today. That's a wrap on India First. See you at the same time tomorrow.